Bismillahirrahmanirrahim. Today I have selected the topic for our youngsters. The topic name is flood relief activities. So in flood relief activities, the first thing which is the most common and important is life saving. So for life saving, you can use different types of boats like log boat, tire boat, PVC pipe boat, inflatable boat and so on. किसी भी किस्म की आप कश्ती यूज़ कर सकते हैं आप लोगों की लाइफ को बचाने के लिए, और लोग खुद भी यूज़ कर सकते हैं बोट्स को. मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमें कोई निकालने के लिए आएगा तो तभी हम मतलब निकलेंगे, लेकिन अगर लोगों के पास अपनी कश्ती है तो वो खुद भी निकल सकते हैं. तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना. और आप अगर किसी की लाइफ को बचाना चाहते हैं तो आप बोट को यूज़ करेंगे इन केस ऑफ फ्लड स्पेशली. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ cloths. You have to provide the cloths on the basis of conditions, climate conditions, that which type of climate conditions are there, it's winter or summer. So according to the climate conditions, you should provide them the flooded people clothes. You should provide the stitched cloths, quilts, blankets, bed sheets and so on. And in clothes you should provide different types of things like socks, caps, and so on. The next important thing is food. You have to provide the flooded people's food in form of like canned food, boiled food, dry food. You can also provide uncooked food if they can cook them, or they have some type of a facility to cook the food. You can also provide uncooked food like tomatoes, cucumbers, and different type of fruits and so on. If there's an emergency, you can't cook food, then you can provide uncooked food like different type of fruits and different type of vegetables like carrot, radish, turnip and so on. Along with it, you should provide the water bottles, because in case of flooded condition, clear water or soft water is not available. So you should provide them water bottles for drinking purpose. You know that during the flood, the sanitary conditions are very poor. So you should also facilitate the flooded people with sanitary facilitations, and you should provide washrooms, separate washrooms for males and females. The medical facility is very important. You have to divide the flooded people in 4 categories, like some people which are normal, some people which require the vaccination, some people require some type of surgery, and some are in critical or severe conditions. So on the basis of their condition, you have to categorize them and treat them in the same way. The next thing is shelter. You have to provide them shelter, like a temporary shelter in different schools, colleges and so on. But the best thing is to provide them PVC shelter or tents or plastics. उसमें ये है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, उनका अपना एक ज़ाती शेल्टर हो जाएगा. So the PVC shelter is very better. Plastic shelters are very better because these shelter can protect them from rains and water. Collection of funds is very important. It is very difficult to collect the funds from different cities. So you should have bank accounts in different cities and collect the funds from different cities, and then make their record. You can make the record online or offline. It depends upon you. But better is to provide the online record so that the people get satisfied, and then distribute the fund in people's, the people based upon the category that they are needy or poor. So you have to provide this category with different type of fund. Drainage. The drainage is very important after flood. The first step is that you have to provide the drainage facility.
you have to drainage the area, because if this facility is not provided, the people gets different type of diseases. तो आपने क्या करना है, एरिया वाइज ड्रेनेज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द एरिया इन डिफरेंट पार्ट्स और कैटेगरीज, एंड you have to drain the area in step wise कैटेगरी, बिकॉज आपने स्टेप वाइज ही उस एरिया को, एक एरिया को डिवाइड कर लें और फिर स्टेप वाइज उसकी ड्रेनेज करनी शुरू कर दें. then two types of drainage होता है, एक फ्लैट लैंड ड्रेनेज है, एक बेसमेंट ड्रेनेज है. यू नो दैट फ्लैट लैंड ड्रेनेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज एक सीधी ज़मीन है, उसके अंदर से ड्रेनेज करना है आपने. तो उसके भी कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर्स मौजूद है कि फ्लैट लैंड ड्रेनेज कैसे की जाती है, एंड बेसमेंट ड्रेनेज के भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करना पड़ता है कि अगर एक बेसमेंट में फ्लडेड वाटर कलेक्ट हो गया तो how can you drain the water. So these type of technologies you can use to drain the specified area, and as you know, most of the areas are very vast, so drainage problem is also very vast. So you have to do this process in different steps, and along with the help of different peoples. So the last thing is recovery to home, recovery of different peoples to their homes. It's the first step. Then step wise you have to recover different things like mosques, hospitals, railways, roads, lands, and you should know that it's very important for the people to recover their jobs. The most important thing is their jobs. तो उनकी जॉब्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो उनकी रिकवरी हो जाए, वो अपनी जॉब्स पर चले जाएं, उनके घर आबाद हो जाए दोबारा, उनकी मॉस्क्स आबाद हो जाए, उनकी ज़मीन आबाद हो जाए. बट यू नो कि जो फ्लड वाटर आता है इट्स रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. तो मतलब इस मिट्टी ये बहुत ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, इसमें मतलब नेक्स्ट आपको बहुत अच्छी फसलें मिल सकती हैं और आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी. ये चीज़ होती है, लेकिन ये होता है कि ये नुकसान बहुत कर देता है. लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम आप इस ज़मीन को आप काश्त के लिए तो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ये कि कोशिश करें कि दोबारा इन्हीं पे घर बनाने की कोशिश ना करें, दूर दराज इलाकों में घर बनाएं, रोड्स बनाएं और इन ज़मीनों को सिर्फ काश्त के लिए इस्तेमाल करें. क्योंकि जो सैलाबी पानी अपनी मिट्टी छोड़ के जाता है तो ये उस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाती है. आपको हल वगैरह चलाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती और इतनी ज़्यादा उसमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और आपको अच्छी सब्ज़ी और अच्छा फल और अच्छी फसल इसमें से मिल जाती है. तो ये चीज़ है, ये कुछ थोड़ी सी मैंने एफर्ट्स की थी अपने नौजवानों को ये बताने के लिए कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि एक मतलब कि एक फ़्लड आया है तो आपने उसमें कौन कौन से रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. अगर नौजवानों को पता हो, हेल्प करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या हेल्प करनी है, फ़्लड क्या होता है, कैसे अचानक पानी आ जाता है और कैसे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनमें आप कोऑपरेशन कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सोसाइटी की हेल्प करते हो, सेमी गवर्नमेंट की हेल्प करते हो. तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं. मगर एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब आप किसी की हेल्प करें तो आप इसमें ये रखें ख्याल के आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो ज़रूर लें, लेकिन उसमें एक होता है कि दूसरों की जो है वो बाज़ लोग होते हैं कि वो हेल्प करते हैं लेकिन वो उसमें यह आ जाता है कि थोड़ा सा दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और अच्छे तरीके से हेल्प करें दूसरों की, और बेशक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. लेकिन एक ये है कि अगर दूसरा भी हेल्प कर रहा है, आप हेल्प कर रहे हो, साथ एक दूसरा भी हेल्प कर रहा है, तो आप उसको भी टॉर्चर ना करें, बल्कि आप उसको भी अप्रिशिएट करें और आप खुद भी हेल्प करें. जैसे कि ऐसा होता है ना, एक बंदा खुद हेल्प कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तो उसमें से मतलब ऐसे मत करें. हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक मतलब हेल्प कर रहा होता है, तो सारों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करें. अगर थोड़ी का हेल्प कर जाता है, एक ज़्यादा हेल्प कर जाता है, तो मतलब सबका एक राइट होता है ना. तो हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहा होता है, तो आप एक सबको अप्रिशिएट करें, सब आगे बढ़ें और सब हेल्प करें. ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो इसमें आप जो है ना कामयाबी हासिल करेंगे और ज़्यादा कोशिश करें कि आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हेल्प करें, बजाय इसके कि दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए किसी की हेल्प करें. तो आज के लिए बस इतना ही.